Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome to the next part of your lecture. अब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टू डायमेंशनल अरेज. पहले तो वन डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज करने का सेकंड वे मैं आप लोगों को शो करूं. एंड इन दिस एग्जांपल हम लोग नंबर वन इसका सेकंड वे मैं आपको शो कराऊंगा कैसे इनिशियलाइज करना है बाय स्टैटिक. Static means hard coding करके. And number two, the second example, we're going to do it like dynamically. User के जरिए हम करवाएंगे. So let's erase this. We're going to make a project. We're going to make a project similar to your term projects, ताकि आप लोग इसको as a guideline, as a baseline यूज कर सके अपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त. So what I'm going to do is create a car management system. Car rental. तो मैं एक कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाला हूँ. What I want to do now is I want to create an array of the string type number one जिसमें मेरी car store हो. तो I'm going to call this car name and like this. उसके बाद I'm going to give this some size, for example 100. For now हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक 100 साइज की array is enough. और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, I want to create another string जिसमें हम अपनी न्यू कार्स को जब ऐड करना चाहेंगे तो अपनी array में तो उसमें उसको स्टोर किया जाए. So let's call this add car and initialize this as an empty string right now. Number three, let's add some cars as default. मतलब हमारे कार रेंटल सर्विसेज में कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो default पे पहली cars available होंगी. So this is the other way to initialize array. This is going to be car name is equal to सबसे पहले we have to initialize the first. 0 means car name में 0 element पर इसको initialize किया जाए. This is going to be Ford. Okay, so मैंने जल्दी से ये कर दिया on my own 3 and on the fourth element is I already did Cadillac. Okay, so हमने 5 गाड़ियां पहले इनिशियलाइज कर दी हैं in this array of 100. Now इस array में हम 100 गाड़ियां स्टोर कर सकते हैं for this management system. And let's change this to count right now and leave this to 0. ये हमें बाद में हम इसको यूज करेंगे, an integer called count. Okay, so this is the second way of initializing our array. अब जैसे आप लोग देख रहे थे in the previous video, हमने
अपने अरे को ऐसे इनिशियलाइज किया था, like this. तो we can't really initialize this about the one for 100 like this क्योंकि बहुत ज़्यादा values इसमें input करनी पड़ेंगी. So this is only for smaller values. Okay. We forgot to make a menu, so let's make a menu here. सबसे पहले let's see out welcome to car rental management system. So आपका जो भी project है आपने वो लिखना है. After that you have to see out your names like this and your IDs like this. So what will your program look like? जब मैं इसको execute करूँगा, you guys are going to see string capital S. And another mistake is car name का capital C. And so many mistakes. I removed size. I need to remove this for now. Okay. So आपका project मेरे सामने आया with it's going to be welcome to whatever your project name is, your name, your group member's name, then your group member's name and their IDs, etc. Okay. After this, you're supposed to do some spacing like this and L and L and L. So इससे कोई spacing हो जाएगी आप लोगों की. After this, I want to see a menu जिससे options user select कर सके. The menu will be switch statement. So let's put in a switch statement. So switch statement में हम check करते हैं the expression. So we're going to get from the user an integer, name it choice, is equal to 0 at the start, or after this area we're going to see in choice from user and उससे पहले we're going to display please select, please choose like this, and then I'm going to type press 1 for view cars, press 2 for add a new car. And I want to give a space. Actually and L कर देते हैं and L. Okay, so let's see how this looks. Expression की जगह we need to put in choice because choice is our value जिसको हमने switch statement में test करना है. Case 1 में we're going to put in 1 and statement की जगह
अगर हमने 1 किया, let's just remove these right now, case 2, and default में I'm going to see out invalid choice, मतलब the user entered a number जिसको हम cater नहीं कर रहे. Sorry, I sound a little robotic today. मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, so please bear with me. Okay, case 1 का मतलब है अगर यूजर 1 एंटर करेगा तो फिर क्या होगा कि press 1 is for viewing cars. We're going to do the same for loop. हमने सब cars जो अवेलेबल हैं वो दिखानी है, और इस केस में हमारे पास 5 cars हैं, right? Which means in the start हमने 4 से initialize किया है. We're going to put 5 here because we have 5 cars. Count is 5 right now. So for int I is equal to 0, I is less than count and I plus plus. Okay, and we're going to see out these cars like this, directly like this. car name 0 अगर करेंगे Ford आ जाएगी, so हमने Ford से start करना है. We're going to put in I here because हर iteration पे I will iterate from 0 to 4, not 5, because 4 is less than 5. तो 0 से लेके 1 2 3 दफ़ा हर iteration में ये display होते जाएंगे. Let me put an NL, and just to make it neat, we're going to see out here. लूप के अंदर नहीं, वरना हर दफ़ा ये टेक्स्ट होगा. We're going to see out the following cars are available, like this. Available / and okay, let's see what happens right now. Okay, scene में मैंने एक मिस्टेक कर दी है. Okay, scene की जगह I don't think ये compiler support करता है our scene को. Yeah, how about I do this? No. Let's just type cout, and we just have to change these brackets like this. And at the end, semicolon, and put cin for choice. Okay, let's check this. It's running. Okay, मेरा program कह रहा है welcome to car rental system and showing my name and roll number. Okay, please choose. Press 1 for viewing cars, press 2 for adding cars. इसको बाद में polish कर लेंगे. 1 करेंगे. The following cars are available: Ford, Cadillac, BMW, Audi, Lexus. Okay, so our application is starting to look a little better. Please choose and help for viewing cars and press 2 for adding any car. Add the following. Okie dokes. Now what we want to do is add here. Press 1 to go back. हम चाहते हैं वापस भी चल जाएं.
press 1 to go back and press 2 to exit. एक और choice 2 भी ऐड कर देते हैं फिर. Okay, that's choice 2 as well. यहाँ पे ब्रेक से पहले we want to ask the user कि वो previous menu में जाना चाहता है या प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहता है. So again let's do this, all of this, paste it here. Please press 1 to go back or press 2 to exit. तो यहाँ पे सीन करेंगे choice 2. Let's do if condition. If choice 2 is equal to 2, actually we want it for choice 1 क्योंकि 1 से हम वापस जाना चाहते हैं. choice 2 is equal to 1, फिर हम actually yes, choice 2, sorry about the logic, is equal to 2. choice 2 के वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे. हाँ, choice 2 को हम इनिशियलाइज कर देंगे is equal to 2. Actually we don't even need to do that as well. हम इधर एक बस एक while loop लगाते हैं and हमारा काम हो जाएगा. We're just going to see in choice 2 एक while loop लगाते हैं in front of this whole switch. While choice 2 is equal to 0. तो ये लूप एंडलेसली तब तक चलता रहेगा जब तक choice 2 0 के बराबर है. over here, right? तो जैसे यूजर को choice 2 okay, let's until it's 1 and choice 2 को यहाँ पे भी by default 1 रखते हैं. So press 1 to go back, press 2 to exit. okay, choice 2 में जब 1 होगा तो हमारा लूप वो चेक करेगा. जब हमारा if statement ब्रेक हो जाएगी तो it's going to go back to the while loop. चेक करेगा choice 2 1 के बराबर है. अगर 1 के बराबर होगा तो दोबारा इसी मेन्यू में दोबारा उसको ले आएगा in the second iteration. लेकिन अगर यूजर choice 2 को 2 सेट करेगा as in exit, it's going to exit the while loop as well. And we're just going to type real quick handle thank you for visiting us, finished. Okay, let's test this real quick. okay, please use press 1 to view cars क्योंकि 2 हमने अभी तक फंक्शन ही नहीं बनाया. okay, these are the following cars available. press 1 to go back, press 2 to exit. let's go press 1. okay, देखें हमने press 1 किया, the loop iterated again. okay, we made a small mistake. हम इसी लूप को हमने इस लूप को दोबारा iterate करवाया जबकि हमने इससे ऊपर वाले लूप को iterate करवाना था. so let's fix this real quick. we need to put the while loop over
Control C इधर से remove करके we need to put the while loop over here. Now let's start this. Okay, press 1 to view cars, press 1 to go back. Thank you for visiting us. Thank you for visiting. Please use. Okay, so this is okay. We get back to the menu. Just एक काम करना है, thank you for visiting us को लूप से बाहर निकालना है ताकि जब लूप एंड हो जाए. ओके सो हमने बस इसको सी आउट को we took it out of this loop. पहले यहाँ पे था, हमने while loop में से निकाल के इसको return 0 के ऊपर लिखा ताकि जब हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा हो तब ये एग्जीक्यूट हो, जस्ट देन, नॉट एवरी टाइम. अब हमने क्या करना है, प्रेस 2 फॉर एडिंग कार की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं. How do we add the functionality? It's going to be in case 2. Case 1 के लिए ये, case 2 के लिए, case 2 के लिए what we're going to do is add a new car. We're going to do for loop, not a for loop, we're just going to add one car. तो for loop की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना है, cout and please add the name of the car. Please add the car like this. This is fine. Okay, अब हमने cn करना है. What was this? add car हमने cn किया. इसके अंदर we can store a string. After that I'm going to, yes, how am I going to add that string? हमारे पास 0 1 2 3 4 तक तो ऑलरेडी हैं, बट नेक्स्ट जो भी कार्स ऐड हों, जितनी भी कार्स ऐड हों वो इसके बाद हो और एक दूसरे के बाद इंक्रीमेंट होती जाए. फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज काउंट इज ऑलरेडी 5, मतलब 5 हमारे पास पहले हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड it like this. Car, where's our array? Car name, and car name में I'm going to put in count. That means count के अंदर 5 है, so हम 5th इंडेक्स पे इस कार को ऐड कर सकते हैं जो यूजर से ली, and it's going to be add car which is a string type. तो we can initialize it inside this array. And उसके बाद हमने क्या करना है, the last step here is हमने count को इंक्रीमेंट कर देना है ताकि नेक्स्ट दफ़ा count 6 हो जाए. तो इससे नेक्स्ट जो भी हम कार ऐड करेंगे वो 5 की जगह 6 पे आए, बिकॉज 5 पे हमने अभी यूजर से कर लिया. After this what we want to do is the same. We're going to, actually what we're going to do is, here is, yes, count हो गया. Please press, okay, we're going to type car added successfully and L. So car added successfully. Now please press 1 to go back, or press 1 to go back, or press 2 to exit. This is fine. Let's test our program. Cout, capital C.
Okay, choose one to view car. The following cars are available. Lexus तक हमारे पास गाड़ियाँ available है. So let's press 1 to go back, 1 to view car, 2 to add a new car. 2, please add the car. I'm going to add Land Cruiser. Press enter. Car added successfully. Press 1 to go back, press 2 to exit. Let's go back. Okay, Land Cruiser. I think I made a mistake in this one. Let me start again. What we want to do is add a new car. Land Cruiser. Enter. Car added successfully. Press 1 to go back. Okay, अब हम cars को view करना चाहते हैं. And you guys see now we have a Land Cruiser as well. Ford, Cadillac, BMW. Okay, let's go back again. I want to add another car, and I want to add Mercedes, and I want to go back again to the previous menu, and I want to view this. Okay, so that means हमारा management system इधर तक work कर रहा है. It's adding new cars, and जब हम इनको display करते हैं तो तब वो नज़र भी आ रही हैं, because the display was based on the count logic. कैसे? In our display for loop, हमारे display के अंदर when we're going to the view cars, the following cars are available. The loop works based on the count variable. तो पहले हमारे पास 5 थी तो our count was 5. तो जब हम एक नई कार ऐड करते हैं तो काउंट में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती है. दैट मीन्स एक चक्कर लूप का एक्स्ट्रा लग रहा है. सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस. सो बेस्ड ऑन दिस वीडियो आप लोगों को अपने मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी आगे तक ले जाने चाहिए. सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.